अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत मज़े की चॉकलेट ब्राउनीज बनाए हैं। अगर आप इनकी रेसिपी चाहिए आप इस वीडियो को देखते रहे। Hey guys, what's up and welcome back to another video. Today I made these amazing chocolate brownies. If you want to know the recipe, keep on watching this video. Recipe, we're going to be needing 200 grams of powdered sugar, हमें चाहिए 200 ग्राम powdered sugar, 150 grams butter, 150 ग्राम मक्खन, 220 grams of all-purpose flour, 220 ग्राम all-purpose flour. We will not be needing chocolate chips, हमें chocolate chips नहीं चाहिए इस रेसिपी में. 2 eggs, 2 अंडे, 150 grams of dark chocolate, 150 ग्राम dark chocolate, 1 teaspoon vanilla, 1 teaspoon vanilla, or 1 teaspoon baking powder, and 1 teaspoon of baking powder. We're going to start off by melting together our dark chocolate and our butter. पहले हम अपने dark chocolate और butter को melt करेंगे microwave में. We're going to melt it in the microwave. It's done. We're going to set this aside. अब हमारी हो गया melt, अपन इसको side में रख रहे हैं. Now we're going to cream together our powdered sugar, eggs, and vanilla extract. अब हम अपने powdered sugar, अंडों और vanilla extract को cream together करेंगे. While our wet ingredients are creaming together, we're going to sift together our baking powder and all-purpose flour. अब हम अपने baking powder और all-purpose flour को sift कर रहे हैं. After our wet ingredients are done creaming together, we're going to add in our butter and dark chocolate melt and our dry ingredients. अब हमारे wet ingredients cream together हो गया. अब हम इसमें अपना butter और dark chocolate melt डाल रहे हैं और अपने dry ingredients. While our batter is mixing, जब तक हमारा batter mix कर रहा है, I'm preparing my pan. मैं अपने pan को prepare कर रही हूँ. For that, I'm brushing it with melted butter and dusting it with all-purpose flour. उसके लिए मैं अपने butter से brush कर रही हूँ pan को और उसको all-purpose flour से dust कर रही हूँ. Now we're going to pour our brownie batter into our pan. अब हम अपना brownie batter pan के अंदर pour कर रहे हैं. Fudge sauce, I have 75 grams of condensed milk and 130 grams of chocolate over here, which we are going to melt. इधर मेरे पास 75 grams condensed milk और 130 grams chocolate है जो हम melt करेंगे अपनी fudge sauce बनाने के लिए. हमारे brownies 150 degrees Fahrenheit पे bake हुए हैं 15 to 20 minutes के लिए. Our brownies baked for 150 degrees Fahrenheit for 15 to 20 minutes, and now I'm pouring my fudge sauce on top of them. अब मैं अपनी fudge sauce इसके ऊपर spread कर रही हूँ. Make sure to not take your brownie out of the pan yet. आपको अभी अपनी नई brownie को अभी नहीं निकालना pan से, because we're gonna bake this for another 5 minutes, क्योंकि हम इसको अब bake करेंगे और 5 minutes के लिए. Five minutes of baking our brownies with the fudge sauce. हमने अपनी brownies को fudge sauce के लिए और 5 minutes के लिए bake किया, and now we're gonna flip them. अब हम इनको flip कर रहे हैं. Our chocolate brownies are ready and they look amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and leave this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. Bye! हमारे chocolate brownies तैयार हो गए और बहुत मज़े की लग रही है. अगर आपको इनकी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को बिग थम्स अप दें और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर फॉलो करें. बाय.